Good morning students, how are you? I hope you all are great at home. Children, today we are meeting for our fourth session of chapter number 3, Numbers up to 1000. I am Nishata from Saraswati Group of Education. Children, first of all, before starting our session, let me give you a recap of what we learned in our last session. In our last session, we learned about grading numbers, right? I told you how 100, 200 and up till 1000 numbers are formed with the help of grid. And we even solved exercise 3.2, 3.4 and 3.5, right? Now, what is the topic for the day? Today, we are going to learn comparison of 3-digit numbers. Yes, what we are going to learn? Comparison. You already know what is comparison. We have already learned comparison of 1-digit and 2-digit numbers, right? Similarly, today we will compare 3-digit numbers. Okay, so let's begin. You can see, children, I have written the name of the topic, comparison of 3-digit numbers. First of all, I have taken an example from the book itself. The example is compare 231 and 167. अब हमको कंपैरिजन करना है, इसका मीनिंग क्या कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है. So how we will compare them? First of all, we will write 100 tens and ones. So first I will write 100 tens ones for this number, and here I will write 100 tens and ones for this number. Okay, now I will place the digits at their respective places. 2 at hundreds place, 3 at tens place and 1 at ones place, right? In the same way for this square, 1 at hundreds place, 6 at tens place and 7 at ones place. Now, you already know what number comes at 100, tens and ones place. Now, how to start the comparison? Whenever you start the comparison, always remember, start the comparison from hundreds place. कहाँ से start करना है comparison? From hundreds place. तो यहाँ पे hundreds place पर इस नंबर में digit है 2 और इस नंबर में digit है 1. So इसमें से क्या पता चला कि 2 is greater than 1, right? ये तो आप सबको पता है. अगर 2 is greater than 1, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये नंबर से बड़ा है, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट डिजिट ही बड़ा है. तो यहाँ पे तो सवाल ही नहीं है कि ये वाला नंबर बड़ा हो सकता है, क्योंकि पहला नंबर ही अगर बड़ा हो उसका मतलब हुआ कि वही नंबर बड़ा होगा. समझ में आया? सो व्हाट कैन वी से? सो वी कैन से दैट this digit 231, right? 231 is greater than 167. हम लोग कह सकते हैं क्योंकि ये नंबर बड़ा है, so 231 is greater than 167, right? और ये भी ऑप्शन है हमारे पास, या ये कह सकते हैं कि 167, ये जो नंबर है 167 is what? Greater than? No. Equals to? No. Then less than is less than 231. दोनों चीजें सही है. या ये नंबर इससे बड़ा है, ऐसा कह सकते हैं, या ये नंबर इससे छोटा है, ये कह सकते हैं. So you can say 231 is greater than 167 or 167 is less than 231. Right, children? I hope you are clear with it. First of all, we have to start comparison from hundreds place. तो इस क्वेश्चन में हमने कहाँ से comparison start किया? Hundreds place. Now, moving on to the other question. What is different in other question? You can see in this question, compare 128 and 131. So first of all, I will write the digits at their respective places. 100, tens
ones. What I will write? 128, right? In the similar way, for the next digit, 100, tens and 1. So what I will write? 131, right? अब हमको कंपेयर करना है, तो मैंने आपको बताया कि कंपैरिजन हंड्रेड्स की प्लेस से होता है, राइट? सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हंड्रेड्स की प्लेस पे यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है. तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा बड़ा? बिकॉज दोनों जगह पे सेम डिजिट है, राइट? तो इस केस में हमको क्या करना है? हमको टेंस की जगह देखनी है कि टेंस की जगह पे कौन सा बड़ा है. यहाँ पे टेंस की जगह पे 2 बड़ा है, सॉरी 2 नंबर है, और यहाँ पे टेंस की जगह पे 3 है. सो 2 इज लेस देन 3, राइट? और ऐसे कह सकते हैं 3 इज ग्रेटर देन 2, ये भी कह सकते हैं, राइट? तो इन दो डिजिट में, इन दो नंबर्स में ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे हमने कंपेयर 100 से किया तो दोनों सेम नंबर है, इसलिए फिर टेंस पे गए. तो टेंस पे जो बड़ा नंबर मिला वही नंबर बड़ा हुआ. तो टेंस पे कौन सा नंबर बड़ा मिला? 3 वाला. तो हम लोग क्या लिखेंगे? सो वी कैन से दैट 131, ये वाला बड़ा है तो ग्रेटर हुआ, इज ग्रेटर देन 128, राइट? और ऑप्शन और क्या है? और वी कैन से 128 इज यस लेस देन 131, राइट चिल्ड्रन? सो आपको डिफरेंस समझ में आया दोनों में क्या है? यहाँ पे 100 से कंपेयर किया था क्योंकि यहाँ पे 100 पे अलग अलग डिजिट्स थी, और ये वाले सम में हमने टेंस के साथ कंपेयर किया क्योंकि 100 दोनों सेम थे. तो ये आपने अभी तक 2 अलग अलग कंपैरिजन्स देखे कि आप लोग 3 डिजिट नंबर को कैसे कंपेयर करेंगे. अब आपको मैं और 2 कंपैरिजन्स बताऊंगी. सो लेट मी इरेज द बोर्ड. Children, now let us learn 2 more comparisons. You can see on the board, I have written an example. Compare 131 and 130, right? तो first of all मैं digits लिख दूंगी उनकी प्लेस पर. So यहाँ पे 131 और यहाँ पे 130, right? तो मैंने क्या बोला था? कंपैरिजन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हंड्रेड्स की प्लेस से. फिर अगर 100 में नहीं हुआ तो टेंस की प्लेस से. सो यहाँ पे हंड्रेड्स की प्लेस पर दोनों पर 1 है, राइट? तो अब हम कहाँ शिफ्ट होंगे? टेंस की प्लेस पर. टेंस की प्लेस पर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है. तो अब क्या करेंगे? दोनों में सेम डिजिट्स है. सो नाउ इन दिस सिचुएशन वी विल कंपेयर इन वंस प्लेस. कौन सी प्लेस पे कंपेयर करेंगे? वंस प्लेस. क्यों? बिकॉज 100 और टेंस पर दोनों जगह पे सेम डिजिट्स है, राइट? तो यहाँ पे वंस की प्लेस पर 1 है और यहाँ पे वंस की प्लेस पर 0 है. तो ये तो बहुत आसान है, वेरी इजी. आपको पता चल सकता है कि 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, राइट? और यू कैन से 0 इज लेस देन 1. ये तो हमको पता ही है. नाउ विच नंबर इज ग्रेटर? किसमें ग्रेटर नंबर आया? ये वाला. तो ये वाला ग्रेटर हुआ. सो व्हाट वी विल से? सो 131 इज ग्रेटर देन 130, right? Or you can say that 130 is less than 131, less than 131, right? तो आपने अभी तक 3 सम्स देखे. तीनों में हमने क्या अलग अलग देखा? फर्स्ट क्वेश्चन में हमने हंड्रेड्स के साथ कंपेयर किया था. सेकेंड क्वेश्चन में हमने टेंस के साथ कंपेयर किया और थर्ड क्वेश्चन में हमने वंस के साथ कंपेयर किया. तो अभी तक हमने 3 कंपैरिजन देखे, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन. यहाँ पे आप लोग देखो, द क्वेश्चन इज कंपेयर 130 एंड 130. So let me write the digits. 130
30, 130. अब what you can see in this question, yes, the digits are same, right? आप लोग क्या देख रहे हैं, दोनों जगह पे सेम डिजिट्स है. So what we can say, so we can say that 130 is equals to 130 because यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं होगा. ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू. ये सेम चीज हमने इसके पहले 2 डिजिट नंबर और 1 डिजिट नंबर में भी पढ़ी थी. यू रिमेम्बर कि इक्वल्स टू कब आता है, जब दोनों जगह पर सेम नंबर हुआ. So this is comparison. I hope children you all are clear with the concept of comparison of 3 digit numbers. Again, first comparison at place of 100. Second, अगर 100 सेम आ रहे हैं तो कहाँ कंपेयर करेंगे, टेंस की प्लेस पर. फिर अगर 100 और टेंस दोनों सेम आ रहे हैं तो कौन सी जगह पे कंपेयर करोगे, वंस की प्लेस पर, राइट. So I hope children you are clear with this, and now we'll move on to our textbook. Children, now open exercise 3.3 on page number 129. I will solve some of the sums for you and I'll give rest as homework. First of all, question number 1. What is the question? Color the box with greater number. Which number you have to color? Greater number. Okay. So, I have written A and B. So, let me first solve the A. In A, there are two numbers given, 127 and the other number is 148. So, both are 3 digits number. So, we will start comparing. So, first let's start comparison from hundreds place. You can see at both hundreds place there are 1. So, we will move on to comparing at tens place. In tens place, here it is 2 and here it is 4. So, which is greater? This. So, what can we say, that this number is greater? So, we can say 148 is greater number. So, we will color this number. Right, I have drawn in blue so that you can get an idea that we have to color this number, because the number in tens place, this number is greater. Right. So, moving on to the next one. B. The first digit is 56 and the second digit is 123. Now, you can see here there is one digit of one number of 2 digit and other number of 3 digit, and you already know that 2 digit is always smaller than 3 digit. So इसमें हमको इतनी कोई कंपैरिजन करने की जरूरत है ही नहीं, बिकॉज पहले से पता है कि 2 डिजिट तो स्मॉलर होता है 3 डिजिट से. सो विच इज ग्रेटर ओवर हियर, ऑब्वियसली 3 डिजिट नंबर. सो वी विल कलर this number. You have to color it with your crayons. Remember, not sketch pen, only crayon, so that you can see the number. और ऐसे क्रेयॉन से कलर करना है कि आपको ये नंबर दिखाई दे. पूरा स्क्रिबलिंग करके बिगाड़ नहीं देना है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे नंबर कौन सा था. जस्ट अ लाइट स्क्रिबल ऑन द नंबर. राइट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दिस देयर आर फ्यू मोर सम्स दैट यू हैव टू डू इट एज होमवर्क. Now, moving on to the second question. Color the box with smaller number. यहाँ पे हमने greater number किया, यहाँ पे हमको smaller number करना है. So, first of all, let us compare. So, moving on to A, 164 and 163. तो first of all, hundreds की place पे दोनों जगह 1 है. So, ये compare नहीं हो सकता. Tens की place पे दोनों जगह पे 6 है, तो ये भी कंपेयर नहीं हो सकता. तो अब कैसे कंपेयर करेंगे, वंस की प्लेस से. वंस की प्लेस पर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज ग्रेटर एंड दिस इज स्मॉलर. और हमको किसको इसमें कलर करना है, द स्मॉलर वन. सो विच नंबर वी विल कलर, दिस 163. इट इज स्मॉलर देन 164.
Similarly, moving on to next question. 152 and other is 52. अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 3 डिजिट नंबर है और ये 2 डिजिट नंबर है. तो आपको वैसे भी पता है कि 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन 3 डिजिट नंबर. तो यहाँ पे कौन सा स्मॉलर मिला हमको? 52. सो वी विल कलर दिस नंबर. Right? It's so easy, right? So next other sums you have to do it as homework. Similarly, moving on to the third question. Color the box that has the number greater than the given. Greater than the given number. यहाँ पे मैंने greater और given number दोनों को अंडरलाइन किया. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी एक नंबर दिया गया है. आप फर्स्ट में देख सकते हो 100 दिया गया है. अब आपको कौन सा नंबर को कलर करना है? जो 100 से बड़ा है. राइट? रिमेम्बर, जब ऐसे क्वेश्चन आए ये थोड़ा ट्रिकी लगेगा. क्वेश्चन को समझिए फिर ही आंसर दीजिए. कलर द बॉक्स दैट हैज द नंबर ग्रेटर देन द गिवन नंबर. इसका मतलब ये जो नंबर दिया गया है इससे जो बड़े हैं उसको ही कलर करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 डिजिट नंबर है. तो जो भी 2 डिजिट नंबर होंगे वो नहीं होंगे बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्मॉलर. सो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. अब ये 3 डिजिट नंबर है तो दिस इज ग्रेटर देन दिस. हाउ? लेट अस कंपेयर. वंस की प्लेस पर, सॉरी हंड्रेड्स की प्लेस पर सेम नंबर, देन टेंस की प्लेस पर सेम नंबर और वंस की प्लेस पर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है. तो कौन सा बड़ा हुआ? 2 बड़ा हुआ. तो ये बड़ा हुआ तो इसको सर्कल करेंगे और इसको कलर करेंगे. So this number will be colored because it is greater than 100, right? फिर वापस आगे गए तो ये 2 डिजिट नंबर, तो अगेन ये तो छोटा है 100 से. और वन मोर नंबर 73, तो वो भी 100 से छोटा है. तो यहाँ पे हमने कौन से नंबर को कलर करना है? ओनली 102 because it is greater than 100. Similarly, moving on to the next question. 201. अब यहाँ पे जो 200 से 1 से जो बड़े हैं उन्हीं को कलर करना है. तो यहाँ पे फर्स्ट इज 205. तो ये बड़ा हुआ बिकॉज 100 और टेंस की प्लेस पर सेम नंबर है. फिर अगर हम वंस की प्लेस पर कंपेयर करें तो ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है. तो कौन सा बड़ा हुआ? ये वाला. तो इसको कलर करेंगे. यस. So this will be colored. फिर next again 190. So let us compare these both. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है. तो कौन सा बड़ा हुआ? ये वाला. राइट? तो ये तो छोटा है और हमको कलर करना है बड़े को. जो ये नंबर है उससे बड़ा हो उसी को. तो इसको कलर करेंगे नहीं. मूविंग ऑन टू थर्ड. ये 201 है, ये 145 है. Compare at hundreds place 2 and 1. Which is greater? This. So this will not be colored because it is smaller. Next 112. Hundreds की प्लेस पर कंपेयर करो. ये बड़ा है, ये छोटा है. तो again this number will also be not colored. And last one 191. और यहाँ पे 201. Let us compare 2 और यहाँ पे 1. तो अगेन ये वाला नंबर बड़ा आया तो ये कलर होगा नहीं. तो इसमें कौन सा नंबर कलर हुआ? सिर्फ 205 बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 201. राइट चिल्ड्रन? नाउ लेट मी इरेज माई बोर्ड एंड आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो. चिल्ड्रन, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. It says color the box that has number smaller than the given number. In the previous sum, in the previous question we did greater number, but now we are asked for smaller number than the given number. So let us start. A, the number given is 12. So remember we have to find the smaller number. Okay. So first is 22. So let us compare. At tens place, because here no 100 is given, so only tens and ones will be compared. So at tens place 1 is here,
and in this tens place 2 is here. So this is greater, but we want the smaller number. So moving on to the next. Here it is 12, 2-digit number, and here it is 2, 1-digit number. So you already know that 1-digit number is already smaller than 2-digit number. So this will come as smaller number. So you will color this number. Right. Moving on to next. 32. Compare the tens place. Here it is 1 and here it is 3. So 3 is greater. So 32 is greater. So we cannot take 32. Right. Next is 42. Again, comparing tens place. 1 is smaller than 4. So this is greater. So we cannot compare 42 because 42 is greater. Right. Next, 52. Tens place 1, tens place 5. Again, 5 is greater than 1. So we can say that 52 is greater than 12. But we want the smaller number. So this can also be not counted. Right. So the only number we got is 2. Right. So this is the number that you have to color. Moving on to the next question. The question is 100. The question is 100. Now, first of all, 100 is a 3-digit number. So let's start the comparison. The first number is 50 and it is already a 2-digit number, and you know that 2-digit number is smaller than 3-digit number. So हमको smaller चाहिए तो ये आएगा. Yes, this will come. So we will color this number. Next is 110. Now let's compare. At hundreds place 1 is there. So now we'll compare at tens place. Here 0 is there and here 1 is there. So 1 is greater. So it means this number is greater than this number. So 110 is greater than 100. But we want the smaller number. So ये ले सकते नहीं है. Then 140. Again comparison. At hundreds place 1 is there. Now compare at tens place. 0, 4. But 4 is greater than 0. So again this number is greater than this number. So it can't be taken. Again 120. Hundreds place 1 is there. At tens place 0 and 2. So which is greater? 2. So again this number is greater than this number. So again we can't take because we want smaller number. Moving on to the last one. 130 and 100. Comparing 100, 1, 1. Now comparing to tens place. 0 and over here 3. So what does it indicate? It says 3 is greater than 0. It means 130 is greater than 100. So we cannot take this number also. Why? Because we need the smaller number. So which number we got the smallest in this question? The smallest number was 50. So we circled 50 and now we are going to color that number. So children, this is the way of comparison of 3-digit number as well as you did the comparison of 2-digit numbers also. So children, this is the end of our today's session. Now it's the time to give the homework for the day. So the homework for the day is the questions that are left in this exercise. I have solved all the questions, but I have solved only few of them. The remaining one, you have to solve it yourself in your textbook itself. Right? So children, I hope you are clear with comparison of 3-digit numbers and I hope you enjoyed the session. Bye.